Now students, we have reached to the final topic of our chapter Poverty as a Challenge, and what this final topic is explaining to you, that is anti-poverty measures or anti-poverty programs started by the Government of India. Government of India. What kind of programs and strategies have been started by the Government of India to reduce the poverty in India? So this last paragraph is explaining to you the government has initiated many poverty tackling programs in India to reduce the poverty, and generally the poverty can be reduced through the two ways. The first one is the fast economic growth rate of the country, and second one is the targeted anti-poverty measures or anti-poverty programs. Let me explain the first point. Fast economic growth, that has not been mentioned here on this board. It is very clear that if we want to reduce the poverty of our country, then what we will have to do, we will have to make the economic growth rate faster. Since the independence 1947 to 1990s, why the Indian governments previously remained unsuccessful to tackle the problem of poverty or to control the poverty or reduce it? Because of the slow economic growth. तो आप इसको सीधा समझ लीजिए कि up to 1980s the growth rate in India, economic growth rate, was hardly 3%, and with this growth rate we could never able to reduce the poverty of India, especially when the population was growing at a very fast pace. So after 1980s and the beginning of 1990s, the growth rate of Indian economy is one of the fastest in the world. So this 3% converted into 6% in 1990s, and then 7-8% in 2000, the first decade of the 21st century, 2000 to 2010. The economic growth rate of our country was 8% or more than 8%, and as a result we have discussed previously how we were able to reduce the poverty. So that means reductions of poverty is directly linked with the fast economic growth. तो ये तो हो गई कि हम पोवर्टी को टैकल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की बात कर रही है, एंड फॉर दैट पर्पस मार्केट इज बीइंग नाउ लिबरलाइज्ड. Multinational companies are invited by our governments to come and invest in India. As a result, the educated youth and the manual labor, they able to get the more and more job opportunities. Now the second one, ये तो है हमारा constant effort. दूसरा, जो ऑलरेडी पुअर पीपल हैं उनके साथ क्या किया जाए? क्या उनको ऐसे ही तकलीफ में छोड़ दिया जाए, या फिर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम्स चलाए जाए, उनको स्पेशल असिस्टेंस दी जाए, हेल्प दी जाए, so that they can somehow manage their poverty situation. So for that purpose the government started or initiated targeted anti-poverty program for these poor people. और मैंने बताया कि इंडिया में दुनिया के सबसे ज्यादा पुअर पीपल का कंसंट्रेशन है, या फिर हम हो सकता है कि फर्स्ट से सेकंड पोजीशन में आ जाएं जल्दी, क्योंकि कुछ कंट्रीज जो है हम अपनी पॉवर्टी को टैकल कर पा रहे हैं और वो अभी भी लैग कर रहे हैं. सो हमने कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स चलाए हैं? ये कोई फिक्स्ड प्रोग्राम्स नहीं है, इनमें टाइम टू टाइम गवर्नमेंट नए से नए प्रोग्राम एड ऑन करती रहती है. हम जो कुछ सक्सेसफुल प्रोग्राम्स को यहां डिस्कस कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज मनरेगा, एंड यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दिस स्कीम ऑफ मनरेगा in your previous chapter also, and this scheme you will have to learn properly because that will come in class 10th also, one of the very important question. So this scheme was launched in September 2005. At that time the then Prime Minister Manmohan Singh, he launched this scheme in September 2005. And under this scheme it is a kind of right to work. We have already discussed, so हम इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे. हमें पता है कि this scheme, under this scheme, the rural people, the people living in the rural area, they are focused, and more focus is among the scheduled castes, scheduled tribes, and the women of the rural area. Why SCs and STs?
know the answer. You have already discussed the poverty among the SCs and STs is more than the national average. And the women of the rural area also, because women empowerment is one of the key factor to combat this problem of poverty. Under this scheme, 100 days employment is generated, 100 days assured work is provided. And Gram Panchayats have been given the responsibility to find out who are the poor peoples, BPL peoples. They are issued job cards, and after issuing the job cards, they are able to get the 100 days work in a year. तो गवर्नमेंट ये आइडिया लगाती है कि इसके अंडर में अगर 100 डेज काम मिल जाए लोगों को गांव में जो बेरोजगार हैं, तो उसका फायदा ये होगा कि उनपे इतनी इनकम आ जाएगी कि दे कैन सर्वाइव. क्लियर. और फिर वो सर्वाइव कैसे कर सकते हैं? बाय गेटिंग द फूड ग्रेन्स एट द राशन शॉप्स एट हाईली सब्सिडाइज्ड रेट, जो कि इस स्कीम के अंडर में हम पढ़ेंगे. तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्कीम. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्कीम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना और PMRY. आप अक्सर सुनेंगे बड़े लोगों को बात करते हुए PMRY के लोन के लिए. तो दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 1993 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अंडर दिस स्कीम द एजुकेटेड unemployed youth, because the age factor is 18 to 35 who want to take the loan under PMRY, तो उनको स्पेशल टारगेट किया गया है, who are educated but still who are unemployed. They can take the loan under this scheme PMRY, and this purpose of this scheme is to provide the or promote the self employment, स्वरोजगार, अपना काम. So these educated unemployed youth can take the loan from the banks or cooperatives under this scheme, and after that they can start their business or their small work. Clear. तो इस तरीके से उनको जॉब मिल सकती है, और अगर उनका काम ठीक चलता है तो वो 10 लोगों को और जॉब प्रोवाइड करेंगे. विद दिस एम इन द माइंड द गवर्नमेंट स्टार्टेड दिस स्कीम. और इस स्कीम के अंदर एक तो जो लोन दिया जाता है बहुत सस्ते इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड किया जाता है, और साथ में उसमें सब्सिडी का भी प्रोविजन है. सब्सिडी मींस कि अगर आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है, आपने कोई शॉप खोलनी है करियाने की, किसी और चीज की, तो उसमें से 20% आपको सब्सिडी मिल गई. आपको 80,000 रुपीज को विद इंटरेस्ट वापिस करना है, और वो भी इंटरेस्ट बिल्कुल मिनिमम रेट पे. सो दिस इज द सेकेंड स्कीम. द थर्ड वन इज द स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. अब आप इसी वर्ड को डिकोड कर लीजिए. स्वरोजगार दैट मींस अपना रोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, लाइक दिस. लेकिन इसमें और इसमें ये फर्क है. पहले तो दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 1999 बाय द गवर्नमेंट. दिस इज सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, और इसमें जो पैसा खर्च होता है वो 75:25 का है. यानी अगर 100 रुपए खर्च हो रहा है तो 75 रुपए सरकार खर्च करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, और 25 रुपए जो है वो लोकल स्टेट गवर्नमेंट उसको स्पेंड करेगी. जितना भी स्कीम के अंडर में पैसा जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा. What is the purpose? Purpose is to generate the employment. Now this scheme, how it is different from this? Because in this scheme the educated unemployed youth take the loan individually, एक व्यक्ति को. Under this scheme, the loan is not provided to a single person, but is provided to self-help groups, SHGs. अब ये SHGs क्या हैं? जल्दी से इसके बारे में सुनिए, और ये फिर आपको 10th क्लास में फिर से आएगा इसके ऊपर क्वेश्चन, सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर. तो अगर गांव में महिलाएं जो हैं वो चाहती हैं कि अपना कुछ काम करें, 10, 15, 20 एक गांव की महिलाएं वो सोचती हैं कि वो पापड़ बनाने का काम करें, तो उसके लिए पैसा चाहिए, थोड़ा मटेरियल खरीदने के लिए, मशीन वगैरह बनाने के लिए. तो जितना रॉ मटेरियल और इन चीजों के लिए काम स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए, उसके लिए दे कैन फॉर्म अ ग्रुप विच विल बी नोन एज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. ठीक है, क्योंकि वो अपनी मदद खुद करने के लिए ग्रुप बना रहे हैं. एंड द लोन इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू दिस ग्रुप, नॉट टू एनी वन इंडिविजुअल बट टू द SHGs. दे आर कॉल्ड SHGs. और हमारे पास तो बहुत सक्सेस स्टोरीज हैं इसकी. सबसे बढ़िया हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं लिज्जत पापड़ की, जिसको कुछ महिलाओं ने, 5-7 महिलाओं ने स्टार्ट किया उस छोटे से अपने काम को, अचार बनाने से लेकर उसके बाद छोटे मोटे पापड़ बनाने तक, और फिर वो धीरे धीरे कन्वर्ट होता होता वो लिज्जत पापड़ श्री महिला ग्राम उद्योग जो है वो एक सक्सेस स्टोरी बन गया SHG की.
और आज उसमें हजारों महिलाएं काम करती हैं और करोड़ों रुपए का प्रॉफिट होता है. तो these are called self-help groups. The government promotes these SHGs in rural area, and generally SHGs are made by the women. The purpose is to provide the financial help to these women so that they can generate employment for themselves. They can start their small work, and after starting it and after getting success, they can provide loan, not loan, but the employment to other women also of the nearby area, just like of Lijjat Papad's success story of this SHG. So I have told you everything about it. I have also told you that the loan is provided at minimum interest rate, and even the subsidy is also provided to the SHGs who are taking loan under this scheme. Next one, that is related to the food. Antyodaya Anna Yojana, that scheme was launched in December 2000, at that time under Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. Under this scheme, initially 1 crore families were provided the food, then 1 crore and 50 lakh, then again 50 lakh were included. That means now 2 crore BPL families are provided the food grains through the PDS system, through the ration shops. And this food grain is provided at a highly subsidized. अब ये जो वर्ड है यहाँ आपने सब्सिडी पढ़ा, या यहाँ पे आपने, और मैं डिस्कस कर रहा था कि गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है. सब्सिडी मतलब जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ हिस्सा छोड़ देती है, आपको डिस्काउंट दे देती है. तो एट अ वेरी हाईली सब्सिडाइज्ड रेट द फूड ग्रेन इज प्रोवाइडेड टू द पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन. दिस स्कीम इज फॉर बीपीएल पीपल, बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल. Under this scheme, wheat is provided at the rate of 2 rupees per kg. जबकि हमें पता है कि अगर नॉर्मली आप मार्केट से लेने जाओगे तो 22-24 रुपए किलो आपको आटा फ्लोर पड़ेगा, या व्हीट लोगे तो वो भी आपको 18-19 रुपए पर केजी के हिसाब से पड़ेगी. राइस इज प्रोवाइडेड 3 rupees पर केजी टू द बीपीएल फैमिलीज, ताकि वो कम सैलरी में भी और कम इनकम में भी सर्वाइव कर सकें. सो दिस इज द मोटो. So these are the various schemes. You can even go through some other schemes also, but I am just covering here the important ones. Clear? And when the question will be asked, what are the various anti-poverty programs started by the government, you can mention all these schemes. Or only on one particular scheme also question can be asked, like you write a report on MNREGA or Antyodaya Anna Yojana, and this Antyodaya Anna Yojana will again come in chapter number 4. So now we have covered everything in this chapter. I hope you understood each and every point and every topic related to this chapter. So now time to say bye. Have a nice day.